Hello, good morning everybody. So in this today's class, I will discuss about the some problem related to your cost. In this problem, I will say you this problem how you have to present in your cost sheet, and the question is given from your Kalyani publisher book, and this question is related to your preparation of statement of cost and profit, and this is your chapter 2 cost and analysis concept classification of cost sheet, right? That means here we have to prepare a cost sheet from the given data. So in the screen there is a question: the cost of sale of product is made up as follows. Material used in manufacturing 5500, material used in packing 1000, material used in selling and product, that is 150, material used in factory 75, material used in office 125, labor requiring production, that means this is the direct labor 1000, labor required for supervision of management for factory 200. This is the labor for factory overhead. Then direct expenses related to factory 500. It is taken as direct expenses under prime cost. Then indirect expenses of factory 100. Indirect expenses, that means this expenditure is coming under your factory overhead. Then office expenses 125. It will be taken under the office and administrative expenses. Depreciation of office building and equipments 75, depreciation of factory 175, selling expenses 350, it is taken into selling and distribution overhead, freight on material 500, advertisement 125. Assuming that all products manufactured are sold, that means this question saying the amount of production are total are sold out. That means जितना भी production हुआ है इस साल में वो सारा बिक गया. What should be the selling price obtained at a profit of 25% of the selling price? That means profit you have to determine on the basis of your selling price. That is 25% on selling price. You can determine your profit. So let us start how to solve this problem. So you have to prepare a format like this: statement of cost, okay, for the year ended 31st March, for the year ended 31st March 2019. Look at here, this question is not specify the year or date. So we have assumed that this is the data given for one financial year, and that may be like this. This is the for financial year of 1819. So I have taken the for the year ended 31st March 2019. For the year, that is not as on. For the year you have to write down. Why? Because the entire year should be utilized to cover the production. Okay, so how you should start? The first item is material in manufacturing. Material used in manufacturing. That means it is a direct material. It is coming under your direct material. So let us start. So first you have to put that amount. Material used in manufacturing. Materials used in manufacturing. How much amount? So put you have to this in, you almost know that the format of the cost sheet. First is particular, then second is your total cost, and the last is cost per unit. And how it is determined? The total cost divided by unit produced, you get the cost per unit. So in this question, the production total quantity of products is not given. So this column remain blank.
up to the end. So we have to only prepare the total value of the cost of the project. So first is material used in manufacturing, that is given in the question 5500. Then next is your next is material used in packing. Materials used in packing. Okay, material used in packing. It is also a direct material cost 1000 given in the question. You can see the question or take a screenshot for your better verify. So material used in manufacturing, material used in packing is coming under your direct material. Then what we have to take? Then we have to take the direct material. The selling and product is not a direct material. So there is another freight on material 500 that is taken into material. So freight on material. Freight on material. That you have to take under direct. These three items you are coming under your direct material. So total amount, this is 500. So total direct material is this much. You may add it. So put your formula SUM sum of this three cell. You get the total of direct material. So total of direct material is 7000. Then what is the direct labor? There is written in the question. You look at the question. Labor required for production. What? Labor required for production. Those are for direct labor cost. Labor required for production. Okay. So labor required for production is the value is, look at the question and take the value. Labor required for production is 1000. Then your direct expenses, one item is given for direct expenses, that is your direct factory expenses. Direct factory expenses 500 rupees. Direct factory, all the direct expenses you have to take it under this prime cost. So direct factory expenses. Okay, so this one is also your direct expenses, so that is 500. Then you added all the item, direct material, direct labor, and direct expenses. Okay, you may write here the total direct material, total direct material. Okay. Then you got the total prime cost is 8500. Then you come to, after preparing this is your prime cost you got from up to this. Then you have to go for the factory overhead. प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद आपको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है. तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो क्या क्या है क्वेश्चन में. फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट. सो फर्स्ट आइटम है इनडायरेक्ट मटेरियल जो दिया गया है. इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब आपका जो मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, मटेरियल materials used
इन फैक्ट्री, मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री आपका है कितना, 75 रुपीज। देन नेक्स्ट आइटम है आपका लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। ओके, लेबर required for supervision, labor required for supervision of factory। ये जो फिगर आपको दिया गया है, लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री, दैट इज योर 200 रुपीज, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर योर फैक्ट्री ओवरहेड। देन फैक्ट्री रिलेटेड और कुछ एक्सपेंसेस है, चेक करो। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी एक है, वो भी जाएगा। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक है, वो भी चला गया या 100 रुपीज का। देन डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी असेट्स यूज हो रहा है उसका जो डेप्रिसिएशन है, दैट आल्सो यू हैव टू टेक इन हियर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन फॉर फैक्ट्री इज 175। ओके, so these are the total factory overhead taken here. Then you have to add it, total it, then you get factory cost, SUM sum bracket। यहाँ प्राइम कॉस्ट के साथ साथ ये सारा को आपको इंक्लूड करना है, तो आपको मिल जाएगा 9050। दिस इज द योर फैक्ट्री कॉस्ट। देन फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, ऑफिस ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना है। देन ऑफिस ओवरहेड में आपका है मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, दैट मींस इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, indirect material used in office। ये ऑलरेडी क्लियरली दिया गया है, so just you have to take it, indirect material of office। कितना है वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू इनडायरेक्ट में 125। देखो क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस करके दिया है, इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस करके 125। उसके बाद आपको ऐड करना है कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। इसी तरह इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस आपको लिखना है यहाँ। उसका फिगर आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस, देखो कितना है, दैट इज योर 125 आल्सो। इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस 125। देन डेप्रिसिएशन है, एक डेप्रिसिएशन था आपका फैक्ट्री और है ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, तो उसको भी आपको यहाँ लेना है। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का 75। देन अब ऐड कर दोगे ये सारा, तो आपको मिल जाएगा क्या ना, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एसयूएम टोटलिंग कर दो, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ साथ सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 9375। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिलेगा 9375। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है ये आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर कुछ है तो यहाँ तो क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, तो 0 डालो। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो 0 डालो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपको वही अमाउंट 9375। उसके बाद हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डालते हैं।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग एंड प्रोडक्ट। ये इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगा, लेकिन वो लिखा नहीं है, इनडायरेक्ट वर्ड नहीं लगा है, मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग एंड प्रोडक्ट लेगा। तो आपको समझना है सेलिंग एंड प्रोडक्ट के बाद अगर कुछ मटेरियल यूज होता है तो दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपको लिखना है यहाँ इनडायरेक्ट मटेरियल used in indirect material used in selling the product, selling the product। ओके, तो ये आपका फिगर है 150 इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन का थर्ड वाला पॉइंट जो है that you have to take in here। then और selling and expenses, selling का कुछ है तो देखो selling का next item है indirect expenses related to selling expenses एक दिया है 350 का, तो वो भी जाएगा यहाँ selling expenses। so वो फिगर है 350। then और क्या है, advertisement है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजिंग कोई बात नहीं, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट एक ही मतलब होता है, बस उसका नाउन का चेंजेस है। एडवर्टाइजिंग हो गया आपका कितना 125। तो 125 इसके बाद आपको ऐड करना है, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो आपको वही फॉर्मूला डालना है सम वाला, एस यू एम ब्रैकेट स्टार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके साथ साथ ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको सारा ऐड कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ है 10,000 का। उसके बाद क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया है प्रॉफिट कितना आएगा आपका प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है अज्यूमिंग दैट ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हमने किया है वो सारा सेल हो गया है। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो मान लो सेलिंग प्राइस है 100, तो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, सो दैट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 25। देन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ना 75 होगा उसके हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमें मिल गया और प्रॉफिट मिल गया, तो उससे माइनस कर देने से हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट यहाँ ले सकते हैं। अभी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम निकालेंगे। तो इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय योर 75 इनटू 25। तो ये मिल गया आपका प्रॉफिट। उसके बाद आपको ऐड कर देना है ये अमाउंट के साथ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपको मिल जाएगा योर सेलिंग प्राइस। तो ये था पूरा प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो देखो अच्छे तरह से हमने यहाँ आइटम सब ऐड कर दिया है, तो आप फिर से भी इसे रिव्यू करके देख के चेक कर सकते हैं सारा आइटम गया है या नहीं गया है। आई थिंक ऑल द आइटम्स गया है। तो लेट अस चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 11 12 okay then 13 14 15 ओके दिस मच। तो देखो 15 आइटम क्वेश्चन में था या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सारा 15 आइटम हमने वहाँ आंसर में कंसिडरेशन लिया और हमारा आंसर आया 13,333.33 पैसा। ओके,
सो प्राइमरी पैकिंग, ये जो पैकिंग हमने लिया है मटेरियल कॉस्ट में, प्राइमरी पैकिंग जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है। मतलब प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग जो होता है, ये वाला प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। ओके, सो ये हो गया आपका सारा। सो थैंक यू इन दिस वीडियो। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे तरह समझ आया होगा। So thank you everybody. See you in the